राइट, सो वी विल स्टार्ट इन अ मोमेंट. उसके पहले 3 ओम कर लेते हैं, एंड देन विल आई एक्सप्लेन व्हाट दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बी. आंख बंद कर लीजिए. यू कैन फोकस अ लिटिल टू योर फोरहेड. कीप योर स्टमक वेरी रिलैक्स्ड. कारण आपको समझ में आएगा, मैं बताऊंगा. पेट को एकदम आसान, एकदम इजी छोड़ दीजिए. पूरी सांस लीजिए जितनी ले सकते हैं. ह्यूमन बॉडी, इसमें एस्टिमेटेड 70% वाटर होता है. वाटर माने फ्लूइड. अब वो वाटर कोई एक जगह तो जमा नहीं है. एक जगह यदि जल जमा होता, इफ द वाटर कलेक्ट्स इन वन प्लेस, तब बॉडी में तकलीफ आएगी. दिस वाटर नीड्स टू मूव. तो व्हाट आर द सिस्टम्स जिसमें जल मेनली रहता है? एक तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ना. जो भी अपने बॉडी में ब्लड रहता है, दैट नीड्स टू सर्कुलेट. नंबर वन. द नंबर टू इज द लिम्फेटिक सिस्टम. हिंदी में शायद उसको, या आयुर्वेद में उसको खाली जल बोलते हैं, या पानी बोलते हैं ना, ऐसे ही कुछ बोलते हैं उसका. जल. द lymphatic system is responsible for cleansing the body from the inside. अंदर से शरीर को साफ करने के लिए. ओहो, कैनॉट कनेक्ट बोल दी. एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. देर इज वन अदर पार्टिसिपेंट, अरुणा जी. वो बोल रही उनका कनेक्ट नहीं हो रहा. इज एनीवन गुड विथ टेक्नोलॉजी? शर्मिला जी, आपको टेक्नोलॉजी में थोड़ा है कुछ? I can manage a little bit, but I don't know ओके. what problem she is having, sir. कैन आई, shall I call her? Shall I do a conference call so that you and she can talk? अरुणा जी, क्या हुआ? Why can't you connect? नहीं, प्रॉब्लम क्या आ रहा है कनेक्ट होने में? जी, लिंक आगे नहीं हो रहा कुछ. आपका कनेक्शन सही है? आपका आपका इंटरनेट कनेक्शन सही है? बिकॉज बाकी बाकी लोग तो जुड़ गए हैं. हाँ, नहीं तो बाकी पार्टिसिपेंट्स तो जुड़ गए हैं, उनको तो प्रॉब्लम नहीं हुई. मैं आपको फिर से लिंक भेजता हूँ. शायद आपने लिंक पे कहाँ पर क्लिक किया था उसको? वो जो, हाँ, ऊपर वाली लिंक में. मैं देखता हूँ, एक सेकंड. अच्छा, जूम पे जा रहा है बट आगे नहीं हो रहा. यूएस, वो है US02.web.zoom.us. उस वाले में करा है क्या आपने? अच्छा. शर्मिला जी, डू यू थिंक यू कैन हेल्प हर? शी इज सेइंग इट गोज टू Sir, जूम बट इट what is डजंट कनेक्ट. she is connecting through her laptop or her mobile? आप लैपटॉप से? हाँ, आप जूम पे हो कि नहीं? आप लैपटॉप में हो कि फोन में हो? फोन, फोन पे है. Should not be a problem. It is. She's asked her to download and means refresh the app again. Kill and refresh the app again. अच्छा, एक बार आप फिर से रिफ्रेश कर लीजिए ऐप को.
डाउनलोड कर लीजिए या आप फिर से पूरा रिफ्रेश कर। हाँ, अच्छा, पुराने, कंप्लीटली क्लोज करके। नहीं, पुराने ऐप को आप एक बार डिलीट करके नया ऐप डाउनलोड करिए और फिर कर लीजिए। 2-4 मिनट समय लगेगा। तब तक मैं थोड़ा बैकग्राउंड इनसे बात करूंगा, तो आप मेन चीज में आपका ज्यादा कोई नुकसान नहीं होगा। प्लीज ट्राई अगेन। थैंक यू शर्मिला जी। नो प्रॉब्लम। तो ये sometimes, first day some people have these issues. या Anyway, so the body is 70% water. This water or the fluids in the body need to move. ब्लड के लिए तो अपने पास हार्ट है। हार्ट डज द पंपिंग। तो हार्ट जब पंपिंग अच्छे से करता है, तब तो ब्लड सर्कुलेशन रिलेटिवली अच्छा हो जाता है। वेयर इज द प्रॉब्लम? यदि कभी कभी ब्लड वेसल्स में कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, इफ दे स्टार्ट नैरोइंग, और इफ द वेसल्स आर कंस्ट्रिक्टेड, माने उसमें जैसे सिकुड़न आ जाती है, तब वो ब्लड के सर्कुलेशन में भी प्रॉब्लम आता है। तब डॉक्टर्स ब्लड थिनर भी देते हैं, वेजो डायलेटर्स भी देते हैं, एंड सो ऑन, सो दैट दिस सर्कुलेशन improves. But what about the other systems? Digestive system, reproductive system, endocrine system, lymphatic system, वगैरह वगैरह वगैरह। ये जो बाकी सिस्टम्स हैं बॉडी में, हार्ट का डायरेक्ट एक्शन उनके ऊपर तो नहीं है। सो दे नीड अ पंपिंग सिस्टम ऑल्सो। वो कौन सा पंपिंग सिस्टम है, आप बता सकते हो? अदर देन सर्कुलेटरी सिस्टम सर। Yes. अदर देन सर्कुलेटरी Other सिस्टम। than the heart, yes. Other than the heart, which works for the blood circulation, These or the, nadis which carry the oxygen, prana. okay, but how do you circulate the other systems? उनको मूवमेंट करने के लिए, वो मूवमेंट शुरू करने के लिए कौन सा सिस्टम है? सी, इज इट रेस्पिरेटरी Respiratory, सिस्टम? यस, respiratory. एब्सोल्युटली राइट, इट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जस्ट बिलो द लंग्स यू हैव अ थिंग कॉल्ड द डायफ्राम। Hmm. Diaphragm is a very, it's a big muscle and it's a very strong muscle. तो डायफ्राम यदि आपका रिलैक्स रहेगा, पेट यदि आपका रिलैक्स्ड रहेगा, तब ये जो पेट अप डाउन होता है, अच्छे से होगा। When your stomach is moving comfortably, if there is a level of relaxation here, if your diaphragm is not very stiff or hard or some way constricted, then this will help with the movement of all the other systems. तो सबसे पहली कार्रवाई सबको जो करने की आवश्यकता होती है कि पेट को रिलैक्स करें, है ना शर्मिला जी? हाउ डू यू नो वेदर योर पेट, योर स्टमक इज रिलैक्स्ड और नॉट? आपका पेट रिलैक्स है कि नहीं, आपको कैसे पता? We have never thought about it, sir. Whether it is relaxed or not. Yes, we've never thought about it. Now the thing is, mind and breath, or mind and stomach, are very closely connected. Whenever there is any stress, mentally or in any way, the effect, the result, or the impact can be felt directly on the stomach. Okay. डायरेक्ट कनेक्शन। आपको गुस्सा आएगा, आपका पेट टाइट हो जाएगा, आपकी ब्रेथ शॉर्ट हो जाएगी। ये तो देखा ना आपने, व्हेन यू आर एंग्री योर ब्रेथ बिकम्स वेरी शॉर्ट। यस और नो? Yes. Yeah. है ना Hmm. शर्मिला जी? नोटिस, जब गुस्सा आता है तो Yes. ब्रीदिंग शॉर्ट हो जाती है। समथिंग सिमिलर हैपेंस व्हेनेवर वी आर डिप्रेस्ड और अपसेट, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जो नेगेटिव इमोशंस जब भी आते हैं ना, some kind of tightness begins to be felt in the belly region. So working on your belly, पेट को रिलैक्स करने का सबसे पहला चीज है ये, कि वो पेट को रिलैक्स करना। Sorry, I'm a little concerned about Aruna ji. She's not able No to, problem, sir. Please take uh, your time. Please take your time. because Help her नहीं to नहीं, join. Then can.
नहीं नहीं, वो बोला उनको अब, आई थिंक शी मस्ट बी गोइंग थ्रू द प्रोसेस. Ah, there she is, there she is, Good. there Yeah. she is, yeah. So this is the thing, ये जो movement of fluids है in the body, movement of systems in the body, because there are many systems. If the systems are working well, namaste Aruna ji, welcome. Is the sound clear? अरुणा जी, आवाज क्लियर है? आप अपने आप को अनम्यूट करिए. आप म्यूट में हो, सो आई कांट हियर व्हाट यू आर जी सेइंग. हाँ, आई कैन हियर प्रॉपरली. वेरी गुड. दिख भी रहा है, सुन भी रहा है. या लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी दोनों चलती है? कैन वी यूज बोथ? या थोड़ा ये बोथ थोड़ा बोथ वो, लैंग्वेजेस, बोथ a लैंग्वेजेस. little bit of both. Very good. So then everyone can understand. Perfect. इनको मैं थोड़ा सा ये बैकग्राउंड बता रहा था कि आवर बॉडी इज 70% वाटर. अपना शरीर 70% मोरलेस जल है, वाटर है. इसके अलावा देर आर मेनी डिफरेंट सिस्टम्स इन द बॉडी. सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्रीन सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सेट्रा. ये जो सिस्टम्स हैं, सिस्टम्स माने इसमें देर इज अ सर्टन मूवमेंट, बिकॉज सिस्टम्स आर डूइंग समथिंग. कुछ ला रहे, कुछ ले जा रहे हैं. व्हाट आर दे ब्रिंगिंग? They are bringing something that is needed by the different parts of the body. What are they taking away? They are taking away that which needs to be removed. ये तो ये तो विश्व का एक साइकिल है ना. When कुछ यूज करते हैं, एक ब्रेथ भी लेते हैं. देखिए, the moment we take a breath, it has brought us life, but we can't keep it inside. थोड़ी देर में तो उसको निकालना ही पड़ेगा. आप ट्राई करिए. Take a breath, hold your breath inside. How long can you hold your breath? Let's see. Take a breath. See how long you can hold it. That's all I've done, sir. I couldn't. That's okay. So there is a there is only a certain amount of time before which whatever has been taken in has to be let go. So this coming and going, this constant exchange, this is part of life. Whatever is happening, for example, with your breath, is also happening inside the body. All the time कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है. और ये आने और जाने में, if there is no archan, if there is no blockage, if there is no restriction, if there is no hurdle, then this will help all the systems in the body to work well, and to help to make sure that the different organs are well taken care of. Very simple logic. बहुत अत्यधिक simple idea है, but something that nobody seems to focus their attention on. We take our body for granted. अंदर में वी थिंक ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू. अपन को जो दिखता है, आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बॉडी इज दैट. अंदर में जब कोई प्रॉब्लम आती है, देन वी थिंक अबाउट अंदर में क्या है, क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, और हाउ टू डू समथिंग अबाउट इट. बट बेसिकली जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग. इफ द systems in your body are functioning well, chances are all your organs will also function well. There may be, there may be exceptions, or there may be, कभी कभी हो सकता है ऐसा कि कोई और कुछ भी हो उसमें. बट अधिकतम ये आप यही नोटिस करोगे कि यदि आपके सिस्टम्स अच्छे से चलेंगे, तो आपके बॉडी के ऑर्गन्स भी अच्छे से चलेंगे. आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, मन भी अच्छा रहेगा, सब अच्छा रहेगा. सिस्टम्स को सही करना चाहिए. तो सिस्टम्स को सही करने के लिए द फर्स्ट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज, जैसे आपने देखा, जब
मन में टेंशन होता है तो पेट में टाइटनेस आ जाती है, मन अपसेट होता है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है. हैव यू नोटिस्ड? Whenever there is any stress or upset or sense of lowness, बॉडी में कोई ना कोई उसका इफेक्ट आने लग जाता है. ये सुनो, Yes. है ना शर्मिला जी? Yeah. Yes. You are thinking, that's okay, you are welcome to think, Yes. but consider and then share your thoughts. Sometimes I have experienced itching or some problems at like piles at the Very very tension. okay, very good. Yes, these different things can also happen, but one of the first things that will happen is कि your body responds in a certain way. One of the things is either Oh. constipation. अच्छा, ये piles, Yeah. whatever you are going to learn just now. Temporary piles problem. Whenever Yes. I experience too much stress. Yes. So we will the techniques that you will learn now with breath will help you with the piles also. ये, and I'm saying this because I've gone through it myself. और मैं, see, I have damaged my body in many ways. Wrong lifestyle, 40 years of smoking, 20 years of 40 cigarettes a day. So I've caused myself a lot of damage. High BP, dawai, but it's all gone. Piles bhi hua tha, fibromyalgia, different kinds of conditions. Most of them cured with breath, which is what we are going to see and learn and experience. Sharmila ji, I asked that question. You were thoughtful. Is there a reason why? Have you noticed? Yeah. No. Please. Yeah. Yeah. Upset. Upset means we don't feel hungry. Okay. We never Fine. feel hungry. So Right. I was thinking, like, in what ways The result. the connection between mind and stomach is what we were talking. Yes. So it's like we don't feel hungry when we are upset. Yeah. So that is one thing. So, Your stomach will feel tight. Number two, constipation may develop. है ना बसंती जी, ऐसा होता है कि नहीं? कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ज्यादा टेंशन करते हैं जब. Yeah. तो यदि यदि आप अपने बॉडी को नोटिस करोगे तो बॉडी के अंदर में टाइटनेस, सिकुड़न आ जाती है. Yeah. Yeah. जैसे अंदर से पेट कुछ टाइट हो गया, कुछ सिकुड़ गया. When this sikudan, when this constriction begins to happen, in a sense, we are causing a little strangulation inside. Okay. सिंपल सी एक चीज करिए. दोनों हाथ को ऐसे लीजिए और अपने गले पे लगाइए और हल्का सा चीपिए, हल्का सा, एकदम हल्का सा, and notice how your breath changes. Just press it very gently, नाम के वास्ते, and notice the difference in the quality of your breath. Just a little bit of pressure here, and you know how your breath feels not so not so easy. Yeah. Yes or no? इजीनेस तो पूरा चला गया, फास्ट हो गया ब्रीदिंग. हाँ, बट वो जो आराम से ब्रेथ अंदर आ रहा था वो हाँ. ठीक से नहीं आ रहा, तो नहीं. स्ट्रेस हो रहा है ब्रेथ लेने में, स्ट्रेन करना पड़ता है ब्रेथ लेने में, जरा सा भी प्रेशर देते तो. So now imagine when you are putting, for whatever reason, a certain tightness, causing a certain tightness in the belly region, this is also affecting the flow of all the systems in your body. Digestive, circulatory, lymphatic, and other reproductive, endocrine, or whatever. All the systems are getting impacted. How many of you meditate? Do you meditate regularly? Basanti ji. I will say, you used to meditate a lot, but last Okay. year I'm unable to concentrate. Okay, we'll It's come to that. Yeah. So Yeah. you have some experience. Sharmila ji, Aruna ji, do you meditate sometimes? I don't meditate regularly, but sometimes whenever I need. Okay. Okay. I meditate. Okay. Sometimes you do fine. All right. Sharmila ji, what about you? no, sir, I don't know. I don't do meditation, sir. I've never done. Never done it. Probably some little bit of here and there in some satsang or whatever, but it's not a regular practice.
It doesn't matter. If you meditate, if you have meditated in the past, you will notice when you sit in meditation, after a few minutes, your breathing becomes a little easier. It becomes a little smoother. The Yeah. reason is, Vasanti ji, is that something you have noticed? ऐसा आपने देखा है? Yes, I है ना, used to जब enjoy meditation, you used to enjoy, हाँ, but तो ये जब मेडिटेशन करते हैं, ये जो एक सेंस ऑफ ईज जो आती है, इसका बिल्कुल मतलब योर बॉडी जो कंस्ट्रिक्शन अंदर में हो गया था, उसको आपने छोड़ दिया, अब वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया. सो द मूवमेंट ऑफ एवरीथिंग स्टार्टेड अ लिटिल बेटर. In a sense, you have allowed a certain amount of vasodilation. माने आपके अंदर की नाड़ियों में आपने थोड़ा सा फैलाव, okay. just by becoming a little more easy. So this is why your breath feels smoother, your Yes, breath feels easier. So learning to keep your body at ease is something everyone should do. किंतु ये बोलना तो बहुत आसान है, करना तो आसान नहीं है इतना. मैंने बोल दिया allow your body to be at ease. Can you allow it? Can you do it? Can you when do it your now? mind is disturbed, you cannot do it. When your mind is disturbed, you can't do it. So we will start with the first thing, which is called belly breathing. आपके पास में कोई योगा मैट है या कोई बेड है या कोई कारपेट Yeah. है, तो आप उस पे लेट जाएं. हेड के नीचे नथिंग. कीप योर हेड at the same level. मैं दिखाता हूँ. I'll demonstrate it to you. I'll lie down here on the little couch here. So, One minute. see how this. Something you give or bedsheet also is fine. There. अरुणा, अरुणा जी आप भी ऐसे करो. कोई भी योगा मैट है या बेड है, एंड लेग्स को ऐसे मोड़ लो. Allow your legs to be in this shape, you know. That means अपने heels को अपने buttocks के पास में ले आए. Knees are pointing to the ceiling. हो गया? शर्मिला जी, have you understood? हाँ. हाँ, ऐसे लेट Sir, जाइए. can you please repeat? Yeah. Okay. Lie down like me. Lie down on your back. Okay. Hey. Yeah. Don't keep anything under your head. Bring your heels near your buttocks. Let your knees point to the ceiling. जैसे मेरे पाँव है. They are pointing upwards. बस. Now stay like this for a little while. आप लोग मुझे दिखते तो अच्छा होता, but doesn't matter. जितना है आप लोग, if you are holding this position, I'm okay with that. Now just allow this position to be there. Stay normal and observe what is going on inside your body. आपके शरीर में अंदर में क्या चल रहा है, इसको नोटिस करने का प्रयत्न करिए. आराम से लेटिए उसमें. शर्मिला जी, यू डोंट हैव टू मूव योर लेग्स, जस्ट लाई डाउन लाइक दिस. आराम से होल्ड दैट पोजीशन. Hands below अरुणा your जी, head, sir. हाँ, सॉरी. Hands, hands below the head, or where do you keep the No, no, hand? no, no, no. Keep nothing under your head. Keep your head flat. Okay. Now, if you like, Okay. you can take one hand Hands and up. put, एक हाथ को अपने बेली पर रख लीजिए, पेट पे. हाँ. Take a hand, put it on your belly. Okay. And see what comes into your observation. वसंती जी, एक हाथ पेट Yes. पे रख लीजिए रख दिया और है मैंने. और ऑब्जर्व करिए बॉडी में क्या हो रहा है.
I don't want to prompt you. I don't want to tell you कि ये हो रहा है या वो हो रहा है. I want you to tell me what is going on. आप मुझे बताएं क्या आपके नोटिस में आ रहा है. It's the belly is going up and down. Yes, very good, Sharmila ji. Belly is going up and down. Are you doing it? No, it is happening naturally. Yes, it is happening. Now remember these three words very deeply. It is happening. You are holding this posture and something, and your belly is moving up and down. You are not doing Yeah. it. It is happening. Very important. Aruna ji, आपके लिए भी it is happening. Gee, it's happening. It is happening. Very good. Basanti ji, Yes. Yes. very good. Perfect. ये जो जो it is happening जो हो रहा है ना, इसको होने दीजिए. All you need to do now is let your mind, let your body understand कि ये क्या हो रहा और क्यों हो रहा. For a few minutes, just focus on the inner processes. Try to make a mental note. Why is this happening without your doing anything? Now, if you notice a newborn baby, जब नया बच्चा पैदा होता है, नया शिशु पैदा होता है, 3 महीना, 6 महीना, साल भर, when it's lying in bed, जिस तरह से आपका पेट ऊपर नीचे हो रहा है, उसी तरह से बच्चे का भी पेट ऊपर नीचे होता है. Have you noticed? किसी ने नोटिस किया? Yes. Yes, sir. Yes. है ना, अपने आप होता है. ये तो उसकी मम्मी तो नहीं बोलती है, उसकी माँ तो नहीं बोलती है बेटे को, बच्चे को कि बेटा ऐसे ब्रीदिंग करो. उस बच्चे को जगत माता, नेचर, माँ ने, जगत माता ने उसे सिखा के भेजा है कि तुझे सांस ऐसी लेनी है बेटा जब तू धरती पे जाएगा. है ना? Isn't that so? Yes. Yes, sir. Yes. Nobody teaches the baby to breathe like this, but the baby always breathes like this. 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, कई वर्षों तक ऐसे ही करता है. धीरे धीरे चेंज होता है वो. जैसे जैसे बच्चा बेचारा बड़ा होता है, लुक एट द वर्ड बेचारा, आई एम सेइंग, जैसे जैसे बच्चा बेचारा बड़ा होता है, उसकी ब्रीदिंग की प्रक्रिया बदलने लग जाती है. The way the baby breathes starts changing as the baby begins to grow. अब बताइए क्यों होता है ऐसा? आजू बाजू का एनवायरनमेंट. हाँ, एनवायरनमेंट. बच्चे के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है. तुम्हें स्कूल जाना है, तुम्हें ऐसे कपड़े पहन के जाना है, इतने समय में जाना है, इतने जल्दी पहुंचना है. तो बच्चे का सेंस ऑफ ईज, सेंस ऑफ रिलैक्सेशन धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है. उसके अंदर में धीरे धीरे स्ट्रेस की बीज का जर्मिनेशन होने लग जाता है. स्ट्रेस इज बिगिनिंग टू ग्रो इन द चाइल्ड्स सिस्टम. स्कूल टाइम से नहीं पहुंचेगा तो स्कूल की मैम डांटेगी. 4 बार 4 बार लेट पहुंच गया, 4 बार मैम ने डांट दिया, तो बाकी साथ में बच्चे हंसते लग जाएंगे उस पे. जाने के समय उसने जल्दी से, समय से खाना नहीं खाया या नाश्ता नहीं किया, तो मम्मी बोलेगी जल्दी करो बस आ गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वो मम्मी भी क्या करे बेचारी, उसको भी बच्चे को बड़ा करना, सिखाना. लेट सकते थे अभी थोड़ी देर शर्मिला जी, बिकॉज अभी कुछ और बताएंगे, इफ यूर ओके, बट अदरवाइज यू कैन लेटर. बैठ जाइए. अच्छा, अभी एक बार बैठ जाइए while we continue this talk. थोड़ी देर बैठ जाइए, so that then there is a little change. और बैठे बैठे, even as you are sitting, allow that belly breathing to happen. Now, when belly breathing happens, the movement is in the belly. There is no movement in the chest. बच्चे का भी यही होता है. बच्चे को आप देखोगे ना, नए बच्चे को, उसके पेट ऊपर नीचे होता है. देयर इज नो मूवमेंट इन द चेस्ट. वही चाहिए अपन को, मूवमेंट इन द बेली, नो मूवमेंट इन द चेस्ट. आपको करना नहीं है. शर्मिला जी, व्हाट इज द टर्म यू यूज्ड? It is happening. यस.
Is it happening now? Uh, Now I feel chest portion is moving more than Okay. tummy So portion. now remember what was happening when you were lying on your back. Hmm. Try to replicate, try to bring that back in your system, that same state. Okay. Aruna ji, जी हो रहा है? Is it जी happening? Okay. हम्म, थोड़ा Vasanti ji, I can't. I have to try. नहीं, try Yes. नहीं. Try करेंगे, you will put pressure on you. Don't try. Just allow that sense, when you were lying on your back. जो state of mind था, जो state of था, what state was there in you, allow that to come back. Okay. Remember, ये it is happening. ये जो शर्मिला जी ने बोला ना भी, it is happening. This is going to be the key. Play it like a mantra in your head if you like. It is happening. So if it is not happening, create conditions so that it is happening, so that you feel it is happening. Vasanti ji, Yes. it is happening. It is. Yes. Yes. Yeah. Very good. Very good. This is the first baby step. ये जो अभी आपका बेली ब्रीदिंग हो रहा है, इसको कई नामों से जानते हैं. कोई डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग बोलता है. यू रिमेंबर वी वर डिस्कसिंग द डायफ्राम, दैट मसल बिलो द लंग्स. तो ये जो एक देयर इज लाइक अ मसल विच इज जस्ट बिलो द लंग्स. जब वो मसल रिलैक्स होता है तब वो नीचे की तरफ जाता है. That causes the organs or the belly to feel as if it is moving outwards. और जब वो डायफ्राम, जब आप ब्रीद आउट करते तो डायफ्राम ऊपर की तरफ जाता है. जब वो ऊपर की तरफ जाता है तो बेली अपने आप अंदर की तरफ जाता है. वेरी सिंपल थिंग, वेरी सिंपल मैकेनिज्म दैट इज हैपनिंग. और ये जितना अधिक होगा, द मोर दिस हैपेंस, this will create a massage effect on your inner organs. Number one, it will allow a certain amount of space or movement in the different systems. Okay. जैसे जैसे ये अंदर के मूवमेंट्स बढ़ेंगे, ईज होंगे, इजीली होंगे, द फ्लो whether in the circulatory system, lymphatic system, digestive system, reproductive system, lymphatic, endocrine system, सब में धीरे धीरे मूवमेंट इंप्रूव हो जाएगा. जैसे जैसे ये मूवमेंट इंप्रूव होगा, टू थिंग्स विल हैपन साइमल्टेनियसली. Whatever these systems are bringing to the different organs. See, यदि systems हैं, and if they are functioning well, they are fulfilling a purpose. Systems are not there just for the sake of systems. There is a purpose behind the systems. तो जो भी system है, यदि उसका जो purpose है, if it is able to fulfill that purpose easily, तो उसका result naturally कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे क्या purpose है इसका? एक तो ये पर्पस है कि बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को, अलग अलग पार्ट्स को कुछ भेजना. दे आर आइदर कैरिंग सम न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन और एनर्जी और whatever there are different things happening and they're all happening simultaneously. साथ में हो रहे सारे के सारे. तो यदि ये अच्छे से होने लग जाएंगे तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट हुआ. और सेकंड, वहां से जो हटाना है, रिमेंबर, आना और जाना. आप पानी पिएंगे तो आपके शरीर से पानी निकलना चाहिए. Yes. आपने पानी पिया बिकॉज योर बॉडी नीड्स वाटर, आपको थर्स्ट लगी है. बट इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि अब आप उस पानी को सारा जीवन अंदर में रखोगे.
उस पानी को आपके अंदर से आके बाहर निकलना आवश्यक है, आना भी आवश्यक. The water coming in is essential, and the water going out is equally essential, if not more. So the more easily, the more efficiently both these things happen, the better will be the functioning of the systems and your organs. Very simple. Belly breathing is the first step. इसमें अभी आपने थोड़ा थोड़ा एक ease, a level of ease is what you are bringing into your system. Now look at this from a different perspective. Can you beat your heart? अपने हार्ट को आप बीट कर सकते हो? Can you say heart start beating, stop beating? You can't do it. वो स्वयं होगा. उसी तरह से जो सर्कुलेशन हो रहा है बॉडी में स्वयं होगा. The food that is being digested, it is happening on its own. It is not in your hands to digest your food. Can I say, Sharmila ji, please digest your food a little better today? Mm. It means nothing. You can't do. It's not in your hands. All these activities of the body are controlled by what is called the autonomic nervous system. System. Autonomic nervous system. ये सारी की सारी ये चीजें अपने आप करती है बॉडी में. The autonomic nervous system has two parts. One is called the parasympathetic nervous system, and one is called the sympathetic nervous system. If one is working, the other will not work. If the other is working, the one will not work. Either parasympathetic or the sympathetic nervous system will work. Both साथ में दोनों काम नहीं करेंगे. Now, body के जो प्रक्रिया, all that is happening in the body happens best when the body is in the parasympathetic nervous system. तब सब चीज अच्छे से हो रही है, अच्छे से फ्लो हो रहा है, अच्छे से फूड डाइजेस्ट हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, एक्सपल्शन हो रहा है, सब हो रहा है. ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, बाकी सभी चीजें जो आनी है जानी है अच्छे से हो रही है. लिम्फेटिक सिस्टम क्लियर कर रहा है, जो चीज निकालना है बॉडी से निकाल रहा है. गुड. बट the sympathetic nervous system, is that a useless system? जब सब अच्छा होता है with the parasympathetic nervous system, then why do we need the sympathetic nervous system? Because there are times when we have to do something to protect ourselves. Supposing मैं बैठा हूं, यहाँ बैठे बैठे आपसे बात कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, या अपना ब्रेथ वर्क कर रहा हूँ, या कुछ कर रहा हूँ. Suddenly, and let's say I'm doing this in a jungle, suddenly एक शेर आ जाता है, या शेर भी छोड़िए, सडनली एक जंगली कुत्ता आ जाता है. शेर तो बड़ी चीज हो गई. लेट्स से एक जंगली कुत्ता आ जाता है, अब मेरे पास आने लग जाता है, मेरी तरफ भौंक रहा है या मेरी तरफ आ रहा है. अब मैं क्या करूं? What should I do now? What is the reaction? Either run or chase the dog. Either I have to run away or I have to fight it. Just two things. To save myself, to protect myself, I can do only these two things. I can run away or I can protect myself. To run away, what must I use? Legs. Legs muscles. Leg- Yeah. Legs Whole body. muscles, and also the hands to Hands give me that also, yeah. momentum. Mm. Also the heart. Heart has to pump harder because now the blood needs to go to my hands and my legs. So the heart needs to pump harder. Also the brain, because now the I brain have has to to be take alert. decision what to do.
it has to guide me what to do, how to do, etc. So now the systems are, how should I say this? The systems are now using its resources or reallocating the resources. जो भी शरीर के resources हैं, इसका reallocation हो रहा है. So now the body's systems are working to make the hands better, work better, legs work better, head work better, heart work better. Heart has to start pumping because I have to run now. है ना? Yes or no? Yes. So यदि if this reallocation has happened, then something in the body will suffer. When we reallocate resources to one thing or to one side, some other side usually suffers unless we have enough resources की दो कोई परेशानी नहीं है. But body में तो वैसा नहीं होता ना. Resources are limited. Are you clear? Have you got the point? So Yes, when we are in the sympathetic nervous system, body's resources are allocated in such ways that they help us to survive better against external threats. Internal threats हैं, diseases हैं, वगैरह वगैरह हैं, तो उसमें ये काम नहीं आएगा. उसमें sympathetic nervous system काम नहीं आएगा. उसमें तो parasympathetic nervous system काम आएगा. Okay. But for external threats, external danger, or external situations where we need to take some kind of corrective action, the sympathetic nervous system kicks in and body's resources are allocated differently. बहुत अच्छी बात है. होना आवश्यक. It's important. If I'm not able to run away when I'm in some kind of danger, or if I'm not able to fight back when I'm under some kind of threat, तब तो मेरा बाय बाय हो गया, है ना? Yeah. Goodbye time almost. So even this is important. But the problem is that in cities especially and in society, see, these external threats have diminished. अब तो ऐसा जल्दी से नहीं होता ना कि कोई जानवर मेरे पे सडनली कूद जाएगा या अटैक कर देगा. Instead of this now, we have started reacting to other people as if these people are a danger to us. कोई ग्रुप में होता है, सोसाइटी में जाता है, वर्क में जाता है, स्ट्रेस भर गया कि अब जैसे मेरे पर कोई थ्रेट आ गया. नाउ द बॉडी डजंट अंडरस्टैंड ऑल दिस. बॉडी समझता है थ्रेट है, reallocate resources. Kick in nervous system, kick in the sympathetic nervous system. Now the sympathetic nervous system has come into action. Rest of the organs, systems will start suffering something. When we start belly breathing, think of belly breathing, जैसे अभी आपने किया. Is it happening now? Sharmila ji, is it happening? Yeah, when I notice it is happening. Otherwise, Very good, very good. That's good. So this is what you must do now. When you notice if it is happening, give yourself a thumbs up. If it is not happening, allow it to happen. As you continue to do this, Vasanti ji, is it happening now? Yes. Yeah. Aruna ji? yes, it is happening. Excellent. So, ये जो it is happening slowly should become your normal system. It is happening. The more your belly breathing is happening, इसको think of this as a switch from the sympathetic nervous system into the parasympathetic nervous system. आप एक और चीज नोटिस करो. When the parasympathetic nervous system is working, you feel relaxed. You feel a little at ease. है ना? Yes. Yes.
जब आप सत्संग में जाते हो, समथिंग लाइक दिस हैपेंस टू यू। अब वहां पे थ्रेट नहीं है। बट व्हेन यू गो टू वर्क, or when you go even sometimes to social situations, maybe a get together of people, maybe family and friends, even there we feel a little tightness in the stomach, we feel a little strain, we feel a little stress, और वो हो रहा है, तो इसका मतलब we are falling into the sympathetic nervous system. Now you have a switch. Now you have a slightly better insight into your system. आपको अपने सिस्टम का एक पकड़ आ गई कि ऐसा हो रहा है, तो मुझे ये चेंज करना है, मुझे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में चले जाना है। Are we clear? Yes. So first goal, allow belly breathing to happen as much as possible. तो अपने अब वो थोड़ा ओवर टाइम हो गया क्या? ठीक है, डजेंट मैटर। आज ये जो भी आज आपने देखा है, समझा है, सीखा है, इसको ओवर द नेक्स्ट 24 आवर्स धीरे धीरे इंप्लीमेंट करिए। एवरी टाइम योर अटेंशन, आपका ध्यान आपके ब्रेथ पे जाएगा, इसको होने दीजिए, करना नहीं है, इसको होने देना। ईज में, मोर एंड मोर ईज। नाउ एक तो आपने ये सिस्टम देखा। नंबर टू, ऑब्जर्व किस सिचुएशन में बॉडी आपका रिलैक्स्ड रहता, बॉडी माइंड रिलैक्स्ड रहता, किस सिचुएशन में थोड़ा कम रिलैक्स रहता, उसको थोड़ा सा, इफ यू कैन डू समथिंग, अपने आप कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज उन सिचुएशंस को थोड़ा कम एक्सपीरियंस करो। Okay. Try to reduce the number of times that your body feels, or your body and mind, or you feel stressed. Slowly, धीरे धीरे, it's a slow process. See, remember one thing, ह्यूमन लाइफ एक बहुत यूनिक लाइफ है। ह्यूमन लाइफ इज नॉट समथिंग, हर कोई को नहीं मिला। इतने प्राणी हैं देखिए जीवन में, ऑल अराउंड अस देर आर डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, जानवर, कीड़े, कीटा, वायरसेस, इंसेक्ट्स, माने सब क्या नहीं है, सब तरह के जीवन, प्लांट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो आप में है वो उनमें भी है। दो चीज होती है लाइफ के लिए, देर आर टू थिंग्स वी नीड। इफ देर इज लाइफ, देर हैज टू बी सम कॉन्शियसनेस, चेतना, कोई भी तरह की चेतना, कुछ तो होने की आवश्यकता है, यदि जीव है तो। और यदि जीव नहीं है तो फिर कॉन्शियसनेस शायद ना हो, बट जीव है तो कॉन्शियसनेस तो चाहिए। और Yes. दूसरी चाहिए शक्ति। कॉन्शियसनेस को हिंदी में या संस्कृत में शिव कहते हैं। सो शिव एंड शक्ति, when these two things are present, life happens. So जो भी जीव है, whatever living thing is there, they all have some kind of शिव, some kind of चेतना ना। कोई कुछ तरह की चेतना तो है उनमें, may not be my kind of chetna, your or our kind of chetna, but there is some kind of chetna. Yes or no? And there is a certain kind of energy. But human being, मनुष्य सिर्फ एक ऐसी प्रजाति है जो अपनी चेतना अपने कॉन्शियस एफर्ट से बदल सकती है। Human beings are the only ones who can actually, with conscious effort, change their level of consciousness. Level of consciousness माने क्या हुआ? अब क्या समझते हो level of consciousness? Theoretically तो तीन है, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस।
वो चीज अलग हुई, से- बट हाँ हाँ कॉन्शियसनेस का लेवल, माने यदि अपने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं तो इसका अर्थ क्या समझते हो आप? यदि सपोजिंग आपने मुझे गाली दी फॉर एग्जाम्पल, और मैंने भी आपको गाली दी, तो ये कैसी लेवल ऑफ ये कैसी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हुई? यदि आपने मुझे गाली दी, मैंने बोला कोई बात नहीं, आप माता जी जैसी हैं या बहन जैसी हैं, यू नो आपने गुस्से में बोल दिया होगा, मैंने आपको गाली नहीं दी, मैंने आपको प्रेम से आपसे व्यवहार रखा, ये क्या सेम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है? नो नो। नो कुछ फर्क है ना उसमें। जी। सो ये जो ह्यूमन बीइंग्स में आपको पूरी रेंज मिल जाएगी, नीचे से नीचे की रेंज मिल जाएगी और ऊपर से ऊपर की रेंज मिल जाएगी, एंड आपके हाथ में, आप उसको नीचे ले जाना चाहते हैं कि ऊपर ले जाना चाहते हैं। ये एक अलग बात है, बट इट्स जस्ट दैट एक ओवरऑल आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आए कि टू थिंग्स, शिव शक्ति और कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी, these are the two things required for life. As you become more and more aware of your breath, you are in a position, आप ऐसी स्थिति में आ जाओगे कि आप अपने श्वास, जो एक शक्ति का रूप है, इसको अपनी चेतना के लिए व्यवहार करना सीख जाओगे। तो पहली चीज अभी क्या कर रहे हो आप? जो चेतना आपको टेंशन में, स्ट्रेस में, परेशानी की तरफ ले जाके रखी थी, आप वहां से हटकर इस चेतना को एक कामनेस, सर्टेन अमाउंट ऑफ पीसफुलनेस, उस तरफ अपने चेतना को आप ले जाओगे। स्टेप वन, छोटा सा स्टेप, एक स्मॉल बेबी स्टेप, उसका आपने आज एक पहला मूवमेंट शुरू किया। टुमारो फिर कल अपन 6 बजे मिलेंगे और फिर इसको आगे लेके चलेंगे। थोड़ा सा मुझे और आगे ले जाने की आवश्यकता थी, बट आज थोड़ा सा फर्स्ट डे था, थोड़ा डिस्टर्ब था, टाइम से नहीं जुड़ पाए, तो थोड़ा रेपिटेशन भी करना पड़ा एक्सेट्रा। बट टुमारो प्लीज बी हियर ऑन टाइम, 6 बजे। जी मेरे मेरे कॉल के लिए वेट मत करिएगा, आप आइएगा, जी जी है जी। ना? क्योंकि या 45 मिनट है, उसको मैं 50 भी कर सकता हूँ, 55 भी कर सकता हूँ, 1 घंटा भी कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। बट हर दिन वो शायद करना पॉसिबल ना भी हो, किसी और का भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, काम हो सकता है एक्सेट्रा। तो इसको अभी आप प्रैक्टिस करें। टुमारो वी विल डाइव अ लिटिल डीपर, कल थोड़ा और इसको इंटेंसिफाई करेंगे, क्या क्या करने का है। तो बसंती जी को साइटिका का प्रॉब्लम बताया उन्होंने ज्यादा, शर्मिला जी को उनको वेरिकोज वेन्स का है, अरुणा जी आपको वेरिकोज वेन्स का स्टार्ट हुआ है अभी। स्टार्ट हुआ है, तो आपके ये घुटने के पीछे ब्लू ब्लू हाँ। गुच्छियां उस तरह से हो जाती हैं क्या? जी जी जी। अच्छा, और इफ यू डोंट समटाइम्स माइंड, पेन्स भी होते हैं। मेरे वाइफ को भी हुआ था, मैंने जी, है आपको हुआ क्या था, आर्टिकल, हाँ, मैंने रीड आपने किया देखा है। वो रीड किया ना? आपने हाँ स्वकोश शुद्धि ग्रुप में डाला था। हाँ जी, डाला था, तो मेरे वाइफ हाँ। को भी वो read किया। बहुत दिनों से है, और मैं बहुत दिनों से उन्हें कह रहा था कि आप करो, बट वो करना नहीं चाहते हैं। घर की मुर्गी वाली बात जो होती है। हाँ बट वो तो है। बट एनीवे, सम टाइम बैक शी स्टार्टेड डूइंग अ लिटिल बिट, थोड़ा थोड़ा उनको इम्प्रूवमेंट है। शी नेवर हैड अ प्रॉब्लम ऑफ पाइल्स, बट लेटली समथिंग हैज क्रॉप्ड अप, नहीं, एंड है ना, जब मैं स्ट्रेस ज्यादा महसूस करती हूँ, अभी वो टेम्पररी तभी बढ़ रहता जाता है। है, तो जब स्ट्रेस के टाइम पे रहता है स्ट्रेस फिर। में भी बढ़ेगा, और खाने पीने से भी फर्क पड़ेगा। देयर आर सर्टेन फूड्स मैंने जिससे ऑब्जर्व आपको किया, लगे। खाने पीने से नहीं फर्क पड़ता। अगर हाँ, मैं आपको स्ट्रेस नहीं में पड़ता। रहती हूँ तब भी होता है। हाँ, तो ठीक है, अच्छा है कि आपने ये अवेयर, अदरवाइज। हाँ आपकी अवेयरनेस है ये। सो डजेंट जी मैटर, अभी जो क्रिया आप सीखोगे और आगे चलोगे, इससे ये मेरी आशा है कि आप बहुत जल्दी इससे यू विल लर्न। मैं नहीं बोलूंगा कि एक दिन में ठीक हो जाएगा, बट ये टेक्निक, ये प्रोसेस आरंभ हो जाएगा कि यू आर एबल टू क्योर इट जस्ट विथ योर ब्रेथ, माइंड यू। सिर्फ ब्रेथ से आप अपना वेरिकोज वेन्स को भी ठीक कर पाओगे, और एटलीस्ट काफी हद तक ठीक कर पाओगे, फाइल्स को भी ठीक कर पाओगे, साइटिका को भी ठीक कर पाओगे। मुझे फाइब्रोमाइल्जिया हुआ था, आई वॉज स्ट्रिकन विथ फाइब्रोमाइल्जिया, कुछ साल पहले की बात है। दिस इज हाउ दिस टेक्निक वॉज बॉर्न। फाइब्रोमाइल्जिया का, आर यू अवेयर क्या होता है फाइब्रोमाइल्जिया? नो सर। नो तो जैसे साइटिका में होता है ना, ये बटक्स में पेन शुरू होके इट गोज डाउन डाउन द लेग्स, काफी पेनफुल जी। होता है, राइट? साइटिका नहीं, फाइब्रोमाइल्जिया में इट्स अ नर्व पेन
शोल्डर्स में या बैक में बहुत जोर से पेन होता है. पेन इज सो बैड, रात को नींद नहीं आती है. So it used to happen to me, and I wouldn't be able to sleep. But because I'm a breath watcher, breath worker, and I'm Hanuman ji का भक्त. So I said, Hanuman ji, क्या कर रहे हो? आपका भक्त इतना तकलीफ आ रहा है, कुछ तो करो. Automatically 2 nights later, I breathed. अपने आप ऑटोमेटिक एक ऐसी ब्रेथ आई, मुझे लगा थोड़ा पैसा भर फर्क पड़ा. I continued doing it for a little longer that night, and I felt a little change in the pain. Then I continued with that same breath in the morning, throughout the day, and continued while doing my exercises, etc. समय लगा, महीना भर का समय लगा, all gone. 95% gone, and the balance 5% over a little time धीरे धीरे dissolve हो गया. But important thing is, ये जो breath आप सीखोगे ना, try to make it your normal breath. Then you will get the best results. आप सोचोगे कि दिन में 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा कर लिया तो उससे हो जाएगा, फर्क पड़ेगा. But to get the अच्छा, it's not as if this breath will cause you any difficulty in any other way. This has become my normal breath now. Even while here, even while sitting here talking to you, in the background that same breath is continuing. जो मैं आपको सिखाऊंगा, starting with the belly breathing. So belly breathing is the foundation. और इसके ऊपर we will build what we will build now. The Hanuman Master Breath. I will end for today. थोड़ा समय अधिक ले लिया, क्षमा करें. And I will see you again tomorrow. Please be on time. Yes, sir. Yeah. Thank you. Namaste. Thank you, Namaste. sir. Namaste.